गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज मीनल हियर एंड आज हम बात करेंगे ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। ऑफन वी फाइंड पीपल कंपेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट एज लेजीनेस। हम सोचते हैं कि लेजी है इसीलिए वो कोई पर्टिकुलर टास्क को टाल रहा है या टाल रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन वही होता है, एक पर्टिकुलर टास्क जो हमारे हाथ में हम उसको टालते हैं, नहीं करते हैं, we delay doing that particular thing that is in our hand, उसको procrastination बोलते हैं। So there is a difference between laziness and procrastination। वो क्या होता है? लेजी बंदा कौन होता है? Who doesn't want to put in effort। उसको जिसको कुछ मेहनत ही नहीं करनी है कुछ काम करने के लिए, वो लेजी होता है। वो कुछ भी काम नहीं करेगा। उसके पास 4 काम होंगे, वो चारों में से एक भी नहीं करेगा, वो लेजीनेस होती है। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? You have 3 tasks at hand, but you are very selective that one particular task which you do not wish to do, you will not do, instead you will do the other 2। आप दूसरे 2 डिफिकल्ट टास्क होंगे वो भी कर लेंगे, पर वो जो एक पर्टिकुलर काम है जो आप जिसको टाल रहे हैं उसको टालते रहेंगे, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। एंड ये कोई, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट इज अ इमोशन। वो एक हैबिट हो जाती है इंसान की ना, एक इमोशन डेवलप कर देते, हैबिट डेवलप कर देते हैं। एंड ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट या इमोशन डेवलप हम करते हैं, बिहेवियर टू बी वेरी प्रिसाइज, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को ही रोक देती है। बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो हम नहीं कर रहे हैं, उसके रीजन हम देखेंगे अभी, जिसकी वजह से हम वो काम नहीं करते और हमारा प्रोग्रेस, हमारा ग्रोथ अटक जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड वो होता क्या है, क्यों हम ऐसे सोचते हैं, क्यों हमारा माइंड जो है व्हाई डज इट टेक दैट थिंकिंग पैटर्न, ऐसे क्यों डेवलप हो जाता है कि हम वो पर्टिकुलर चीज को रोकते रहते हैं, टालते रहते हैं। वेरी 3 to 4 important things one needs to remember is, एक तो या तो वो काम जो हम करना है या जो जिसे हम टाल रहे हैं, it is very easy or it is very difficult or you're overwhelmed, you have so much of information gathered for doing that particular task that you are really confused। confusion हो गया है दिमाग में, कैसे करना है नहीं करना है। एंड very important is you're not aligned to it। जो आप काम को, जिस काम को आप टाल रहे हो ना, you're not aligned। जैसे होता है ना, हमारे कोर वैल्यूज होते हैं जो हम बहुत बार we hear people saying मेरा मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, which means you're not aligned to do that job। जो काम हमने हाथ में लिया, मेरा मन नहीं करता, टालते रहते हैं। तो ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से हम टालते हैं। लेट्स गेट लिटिल डीपर इनटू इट। लेट अस टेक द फर्स्ट थिंग, मेरा मन नहीं कर रहा है वो काम करने के लिए, इसीलिए मैं उसको टाल रहा हूँ, काफी दिनों से टाल रहा हूँ। सो वो होता क्या है, बहुत बार, जैसे वी हैव डिस्कस दिस इन अर्लियर सेशंस आल्सो, हमारे हर एक के ना वैल्यूज होते, कोर वैल्यूज होते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं हर एक के काम करने के। तो अगर कोई टास्क आपको किसी ने दिया है जिसमें यू फील दैट यू आर रिक्वायर्ड टू compromise with the values or the principles that you have laid for yourself, in that situation you will often find yourself procrastinating doing that task। So just identify, कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, आइडेंटिफाई, ये जो काम हमें दिया गया है जिसको मैं टाल रही हूँ या प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, what is that, और मेरा कौन सा वैल्यू is getting compromised in it। if you're able to identify that value, very well identify। and कभी कभी ना we have laid very strict rules and principles हमारे खुद के लिए, हमने बहुत strict rules and principles ले कर दिए हैं। तो कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है, ये जो रूल्स प्रिंसिपल्स हमने किए हैं अपने लिए, आउटलाइन या बॉर्डर किया है, वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट तो नहीं है जो मुझे कुछ काम करने से टालता है या जो मेरी ग्रोथ को टाल रहा है। तो एज इन व्हेन पॉसिबल ना, वी शुड रीविजिट जो प्रिंसिपल्स या वैल्यूज हमने अपने आप के लिए क्रिएट किया है। ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू नीड टू ऑल्सो लर्न टू से नो। जैसे किसी ने आपको कुछ काम दिया है और आप टाल रहे हैं, चलो टालना तो क्या हुआ, आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा, राइट? कल नहीं तो परसों, डे आफ्टर टुमारो, और आफ्टर अ वीक यू विल हैव टू डू दैट वर्क और दैट टास्क। But then if you think that this is really something you cannot do because it's a huge compromise with your values and principles, then learn to say no। Put your foot down। सामने वाले को मना कर दो कि ये मेरे से नहीं होगा। इससे क्या होगा, यू विल गेट आउट ऑफ दैट लूप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। बिकॉज ये जो हैबिट हम क्रिएट करते हैं ना टालने की, वी डू दैट
we will do that work tomorrow, day after tomorrow, परसों तरसों, वो एक हैबिट होती जाती है. एंड वॉट एवर हैबिट वी डेवलप ना, इट स्टेज विद अस. दैट बिकम्स अ थिंकिंग पैटर्न, दैट बिकम्स अ बिहेवियरल पैटर्न विच गोज ऑन विद अस. वो एक सिचुएशन या एक काम के लिए सीमित नहीं रहेगी, वो हर एक काम के लिए फिर हमारी वो आदत बन जाती है, हम वो ही करते जाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है ये मुझे नहीं करना, ये मेरे से नहीं होगा, पुट योर फुट डाउन एंड से, लर्न टू से नो. I've come across many people who are not able to say no. मना नहीं कर सकते कोई भी चीज के लिए. कोई उनको like you know किसी ने उनको कुछ खाने के लिए दे दिया. Like very classic example, a person suffering from diabetes. Okay, if he or she is visiting the relatives, they मीठा देते हैं, they give sweets and all. But if the person knows very well that eating sugar is poisonous to me, a person with diabetes, definitely he cannot eat sugar in excess. So, but just because he cannot tell no to somebody, he will eat sugar. Do you think that is the right thing he is doing? Absolutely no. Same thing. If you are given a task which you think is not aligned to your core, which is not aligned to your values and principles, put your foot down and say no. That will help you, that will save you of so much of trouble, and it will get you off that habit, that which you otherwise would create, the procrastinating habit. So that's one thing that could be the reason you are procrastinating. What is the second reason? Second reason is, you're not aligned and you are not, you're overwhelmed. Like when you decide to do something or when you plan to do something, you will have 10 people coming in advising you. It often happens. It could be your friends, it could be your well-wishers, it could be your family, colleagues, your spouse, whoever it is. And they all are telling you or all are advising you with very good intentions. They don't have any bad intentions or, wrong thought process, nothing. But there is so much of information, you're getting confused. So kya karna hai? What will you do? When you have so much of information in pursuing or doing what you're supposed to do, you just leave it. Because you just get confused. Ye karu, should I follow the A pattern, B pattern, or C pattern? And in that confusion, you just delay doing that work. Now, what is happening in the process? You are delaying that work, which otherwise could have given you the growth and the development which you really wanted. But because of their overwhelm, you are not able to take decision. So in this situation, you have to be very, very careful. Yes, listen to everyone. सबकी बातें सुनो. सुनना सबका है, because सब जो हमें एडवाइस देते हैं कोई पर्टिकुलर काम के लिए या चीज के लिए, लाइफ में कोई भी काम चीज परिस्थिति में, वो हमारे वेल विशर्स हैं, वो हमारे अच्छा सोच के देते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा सोच के देते हैं. I'll leave aside वो 2%, 3%, people who generally give advice just for the sake of it. वो बहुत कम होते हैं, but otherwise अच्छे के लिए ही एडवाइस मिलती है हमें. तो वो अगर वो 2%, 3% निकाल दे, तो देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज और वेल विशर्स हु आर एडवाइजिंग अस. तो हमें ये सबका इंफॉर्मेशन लेके एंड ऑफ द डे डिसीजन हमारा खुद का होना चाहिए. हमें वो करना है जो हम इजिली कर सके, जो हम इजिली अचीवेबल हो हमारे साथ. So what you should do, when people are advising you, giving you 10 different advices, in the parameter of 1 to 5 or 1 to 10, list down which advice is something that you're congruent to it, which is aligning to your own core, and which you think you will be able to execute. 1 to 10 के list में आप जब भी वो निकालेंगे ना, you will come up with 3 or 4 options. Again, do the same exercise. When you do the same exercise, you will shortlist, shortlist हो जाता है अपने आप कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है. जब भी आप ऐसा करेंगे ना, तो ये जो आपकी टाल दे की हैबिट थी, which otherwise you would continue confusion में, वो चली जाएगी, and you will immediately finish the task rather than pushing it for some other day. So the two things we saw, one is overwhelm, that is more information pouring in by way of advising and guiding, etc. First one was something that is not aligning to your core value system, not in alignment. The third is very you'll be surprised, ये भी कोई reason हो सकता है कि हम अपना काम टालते हैं. Something you think is very easy. अगर आपको लगता है कि ये जो काम मैंने हाथ में लिया है ना, वो बहुत easy है, तो आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट जो भी बोलो आप हो जाते हो. आपको लगता है ये मैं आज नहीं, मैं कल करूंगा. I will do this task tomorrow. I will do it, at the last moment. We have come across children
who are very confident on one particular subject, एक particular subject को लेके बहुत confident होते हैं, and they feel कि उसकी studies या उसका revision जो भी है ना, I'll do it last minute पे. They keep procrastinating. That's what they're doing, right, in the process. No, I will not revise this in 1 month before the exam. I will revise it only 10 days before the exam. They're procrastinating. In the process, many a times, what happens is due to their overconfidence or due to their procrastinating habit, they're not able to give justice to that subject. वो ज़्यादा time नहीं दे सकते, and they're not able to perform to the best of their capability because उन्होंने delay कर दिया, उसको टाल दिया था practice करना या revise करना. So when even the task is very easy भी हम ये कर लेते हैं. तो ऐसे situation में what should we do? And एक और very interesting thing about our human mind is, एक जब भी कोई भी काम हमारा easy होता है ना, we don't get that drive, we don't get that kick. काम करने से ना कभी कभी हमको बहुत drive मिलती है. We are driven to do a work. If it's just not the exam, even if it is something that you're doing in your profession, if you have those targets or deadlines and all, you get that drive, or you get that kick in doing that work last minute pay. So when you feel that you're not getting that excitement in doing the work and you find it easy, you stop doing that work and you keep postponing. So try and identify the same task, if I have to do, how do I make it more exciting? See, the whole idea is we're just not focusing on we do the work on time or we get the excitement. The idea is to get rid of this habit of procrastination. And why do we need to get rid of it? Because ये emotion है which is हमारी self esteem की वजह से भी हो सकता है, हमारे self doubt की वजह से भी हो सकता है, कभी कभी depression में भी होता है ना, तभी भी वो टलता है. So we don't know ये कौन से emotion की वजह से ये जो habit procrastination का emotion develop हो रहा है, उसको हम कैसे उसको कैसे हम handle करें, उसको कैसे avoid करें, how do we overcome? तो इजी टास्क को भी जब भी हम एक्साइटिंग करने में लग जाते हैं, फाइंड वेज के इजी है बट उसको कैसे एक्साइटिंग करें. जब भी हम वो फाइंड कर लेते हैं ना, तो हम वो इजी टास्क को टालेंगे नहीं, इमीडिएटली कर लेंगे, वेरी हैप्पीली बोलेंगे कि अरे ये तो कितना अच्छा है, आई नो इट वेरी वेल, चलो मैं अभी कर लेता हूँ, रादर देन ओ ये तो बहुत इजी है, मैं बाद में करूंगा. तो अपना पूरा डायलॉग ही चेंज हो जाएगा. यू विल मेक दैट थिंग वेरी एक्साइटिंग एंड डू इट इमीडिएटली ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ थिंग. एंड हमारा ब्रेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कैसा होता है पता है, वी नीड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है. ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? रिवॉर्ड. लाइक सपोज आपने कुछ काम किया एंड आपको उससे खुशी मिलती है, दैट इज अ ग्रेटिफिकेशन ऑफ माइंड, ब्रेन गेट्स. आपने कुछ खाया, फॉर एग्जांपल आपको कोई चॉकलेट पसंद है, यू एट दैट चॉकलेट एंड यू फील रियली हैप्पी. मोस्ट ऑफ द पीपल हु लाइक चॉकलेट लवर्स लाइक मी, they feel very happy when they eat chocolate or they eat ice creams. Okay, तो उसको खाने के बाद immediate pleasure या immediate खुशी मिलती है, that is called the gratification. And suppose आपने जो काम लिया है, जिसको आप टाल रहे हो, वो आपको gratification नहीं दे रहा है, which means it is not giving you the immediate satisfaction or happiness. You will keep postponing it. आप उसको टालते रहोगे because you're not getting any immediate reward. Procrastination से क्या होता है, you are just getting rid of the task for the minute. वो मोमेंट के लिए you're getting that pleasure. आपको एक मन शांत हो जाता है, चलो मुझे आज ये अभी नहीं करना, मैं नहीं करूंगी, and you are at ease. But long run में you are not getting into the right space because वो काम करने से आप जहां पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंचोगे. Just because you're uncomfortable doing that particular work for whatever reasons we have shared, you are postponing or you're delaying doing that work, or immediately तभी के तभी शॉर्ट टर्म आपको अच्छा लगेगा बट लॉन्ग रन में वो अच्छा नहीं रहेगा. सेम थिंग, माइंड डजंट अंडरस्टैंड. उनको माइंड को इमीडिएट ग्रेटिस्फैक्शन या इमीडिएट प्लेजर चाहिए. जब भी उसे वो नहीं मिलता है तो वो पर्टिकुलर काम करने को वो टालेगा. वो आपको बोलेगा बाद में कर लेते हैं. दिस इज द डायलॉग दैट गोज ऑन इन आवर माइंड आल्सो. फॉरगेट इट, विल डू इट लेटर ऑन, इट्स सच अ इजी थिंग, लेट इट बी, वी हैव इनफ टाइम. ये सारे रीजंस वी विल फैब्रिकेट एंड विल गिव आवरसेल्फ. So when you are in a situation like this, just be aware and understand that your mind is trying to make you procrastinate doing that particular task. So take charge of it and identify how do you make that task easier, and make yourself understand कि ये काम करने से I may not get immediate reward or immediate gratification नहीं मिला, but in the long run it is
it's going to be instrumental in my growth and in my development. When you have this kind of conversation internally, you will get rid of this habit, even while doing your easiest task. And one more reason why people procrastinate is if they find the job very difficult. वो बहुत बार होता है, हमने बहुत देखा है, कोई टास्क आपको दिया गया है, वो घर हो या परिवार में किसी ने कुछ काम दिया हो या ऑफिस में कुछ हो या आपका बिजनेस डिसीजन हो, कुछ भी है, एक एनी पर्टिकुलर थिंग दैट यू फील बहुत डिफिकल्ट है. नाउ डिफिकल्ट, व्हाई विल यू फाइंड इट डिफिकल्ट? Two reasons: because you think you're not competent for it. Second is you feel that you lack some skills on it. दो reasons हो सकते हैं. एक हो सकता है कि आपको लगता है ये मेरे से नहीं हो सकेगा, या आपको लगता है इसको करने के लिए मेरे पास स्किल्स नहीं है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यू नीड टू डेवलप. इट इज नॉट नेसेसरी कि हम जो भी काम लें उसकी पूरी नॉलेज या उसके पूरे स्किल्स हमारे पास हो, राइट? डे वन पे नहीं होते हैं. We all are work in progress. So we have to learn and upscale ourselves. So what you need to do in this situation, if you find yourself in a situation where you are procrastinating a particular task because of the task being very difficult, you finding it difficult, what you need to do is identify what are the skill sets I need to develop. ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे सीखनी है, कौन सा ऐसा स्किल है, या कौन सी ऐसी लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभी प्रेजेंटेशंस बनाने में हमको कुछ एडवांस्ड ट्रेनिंग की जरूरत है, या इफ यू आर वर्किंग ऑन सम एक्सेल शीट, देयर आर सम अपग्रेडेड वर्जन्स और अपग्रेडेड updates that you need to know before you go ahead and complete that project. See, I'm not very well versed with these names and all, computer accounts को लेके and presentations को लेके. So please excuse me on that. तो अगर ऐसा कुछ भी है, if you are in a situation where you think आपको बहुत कुछ सीखना है वो काम कंप्लीट करने के लिए, वो एक रीजन हो सकता है. तो क्या कर सकते हैं? हाउ कैन यू ओवरकम? वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई क्या सीखेंगे तो हमें काम ये डिफिकल्ट कम लगेगा. अभी तो ये पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, एंड देयर आर सो मेनी सो मेनी वेज पीपल आर कमिंग अप. यू कीप सीइंग एडवर्टाइजमेंट्स, ये वो, तो यू मे जस्ट गेट कंफ्यूज्ड एंड लगेगा मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, इसके लिए मैं काम नहीं कर सकूंगा. तो जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या मैं सीखूं या क्या मैं अपना स्किल डेवलप करूं जिसकी वजह से ये टास्क मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगे जो अभी लग रहा है. सो व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट ना, यू विल स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट काम की वजह से ही होता है या इजी काम की वजह से. ये एक हमारे ये इंडिविजुअल की एक इमोशन, एक हैबिट हो जाती है, बिहेवियर हो गया है. ये बिहेवियर कोई भी ह्यूमन बीइंग का ना बिहेवियर उसके थिंकिंग पैटर्न से होता है. नाउ दिस habit or behavior of procrastination, as I mentioned, could be due to your self-esteem, low self-esteem. It could be due to your lack of competency, the talk that goes in within you. It could be due to some anxiety that you have. It could be due to some depression you are having internally. उसका root cause कुछ अलग हो सकता है. This behavior is a result of something that is going on inside. Now I don't want to scare you of all that. बहुत बार जरूरी नहीं है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है. सो जस्ट आइडेंटिफाई. ये चार जो हमने ऑप्शंस दिए, चार रीजंस दिए, उसमें से कौन सा फिट बैठता है आप जो काम टाल रहे हो उसके लिए. इजी है इसके लिए, डिफिकल्ट है इसके लिए, या मुझे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है इसके लिए हो रहा है, या मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके लिए मैं कंफ्यूज होकर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या तो फिर ये जो काम मुझे दिया है वो मेरे इट इज नॉट अलाइन टू मी. ऑल्सो व्हेन दिस इज द सिचुएशन, आपको ये गिव टू अंडरस्टैंड, आपको ये पूछना है ये मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ और किसी के लिए कर रही हूँ. बहुत बार ना हम जब भी किसी के बोलने पे कुछ करने जाते हैं, बिकॉज somebody wants us to do something, we do. In that situation also we try to delay doing that work. बहुत होता है ये. So अगर ऐसा है तो just double check कि मैं करूँ नहीं करूँ. And as I said, मन नहीं करता तो मना कर दो. Take your stand and tell no. This is better than unnecessarily forcing yourself and creating that habit of procrastinating, right? And जब भी ऐसा situation आ जाता है ना, you need to ask few questions to yourself. क्योंकि ये तो हैबिट है, चलो, बट हमें काम तो करना है. We cannot have this habit or this behavior of ours stop our growth. तो जब भी आप ऐसा, सपोज हम वो वाला सिचुएशन ले लें कि जहाँ पे आपको काम बहुत डिफिकल्ट लग रहा है,
तो क्या करेंगे, हमको ना वो काम जो करना है ना, वी ब्रेक दैट वर्क इनटू स्मॉल सेगमेंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, इट इज 1 to 10. We break it 1 to 5. Take one small step every day. You cannot allow your behavior or your thinking to stop you from growing. So every day when you take one single step in the direction of growth, you will overcome this, right? तो हाउ मच एवर, कितना भी डिफिकल्ट कोई भी टास्क क्यों ना हो, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके एक एक पार्ट को हैंडल करेंगे ना, वो टास्क बहुत इजी हो जाएगा. ट्रस्ट मी ऑन दैट. नाउ इफ somebody wants to lose 20 kgs, I'm just giving you a very simple example. बहुत we all come across the situation weight loss का लेके, because हमारे खाने पीने की habits have become so super, you know, our eating and drinking habits have become so nice that often we come to a situation that we want to lose weight. Now, if you think that you want to lose weight 20 kgs, I mean, that's not possible in 1 month, right? And if you think, okay, I have to lose weight and I have to lose 20 kgs, even let's not go to 20. Let's say if you want to lose 10 kgs, and if you think, okay, 10 kgs I want to lose in 1 month, and you go to a dietitian, you go to a gym, you go to an instructor, they will give you a very strict diet, which you will, of course, you're paying for that, so you will very happily on the face हाँ करके ले लोगे, and gym जाओगे, वो exercise भी अच्छे से आपको बता देंगे, but होगा क्या, you know, looking at the diet, you will just be demotivated. How can I starve myself to this extent? करना तो है, but 10 किलो एक महीने में करना is something you're not willing to and you will not be able to. So what you can do is, go ahead with the same principle. Definitely consult a dietitian, go to the gym or get into some exercise regime. And the diet has to be such that you don't get into, you know, that rat race of losing 10 kgs in a month. Lose gradually, slowly, one step ले लीजिए. तो अपने आप you will achieve what you want. And जो fear था, या जो एक हमने अपने आप को वो जो बना दिया था ना कि I will not be able to lose or I have to lose, जो इतना stress create कर दिया था ना, वो भी चला जाएगा. So break that task into smaller portions and take one small step every day. This is how you can do. And overwhelm जो हमने बोला, बहुत सारी information हमको दी गई है, तो हम क्या, what can we ask? We need to ask ourselves that whatever information I have got, if I have to scale it 1 to 10 के बीच में या 1 to 5 के बीच में, what rating will I give to each information that I have received? So for example, if you have to do a project, 10 people have advised or 5 people have advised, 5 different advices. So in the scale of 1 to 5, where do you rate their advices? Some of them will just fall off, which will not come into the scale rating at all. You will be able to shortlist 1 or 2. So take that 1 or 2 shortlisted advices and start with your work. Okay, when you do that, now you will stop procrastinating because of that over information that you have received. Same thing goes with when the task is very easy. क्या करेंगे? Identify 5 things that will make your task easier. वही काम को हम exciting कैसे करेंगे? 5 चीज 1 to 5 scale में आप लिख दीजिए. Scale it up. Okay, if I do it in the morning, will that make me happy? Or if I do it, or if I treat myself, very sweet way to push yourself to do something. If you are a chocolate lover or ice cream lover like me, treat yourself. Okay, fine, let me do this work and I'll treat myself with ice cream. If you have that thing in yourself, you'll easily stop this procrastinating habit. Easier task also, you will be willing to do it immediately. And the first one, with something that is not aligned, uske liye to yes, you need to ask yourself. Again, take the scale of 1 to 5 or 1 to 10. The task which I'm doing, what are my values? What are my rules? What are my principles? As I said, sometimes we are being very, very harsh with setting rules and principles for ourselves. So that also you need to check. Are my rules and principles really adaptable? Are they really something that I should go ahead with at this point in time? Time and again, हमें वो भी change और check करना होता है. So if you think your principles or rules need to be changed, please work on it. आपके rules, principles को थोड़ा friendly बना दीजिए. Friendly to yourself. Be kind to yourself at this point. Then start doing the work. And still, if you think okay, the task which I'm doing is for somebody else and there is a huge compromise, scale it in 1 to 5. If you get 3 reasons for doing the task and 2 reasons for not doing the task, you have the answer. Go ahead and do the task because that's the majority, right?
So this, when you do this cross and this check balance thing, when you do na scaling, rating mein aap, when you try and identify on the scale of 1 to 5 and 1 to 10, you'll get answers very simply. But simple exercise hoti hai. This you can do in anything you're working on. Koi bhi cheez ke liye, when you're doing, when you are in a situation when you have to choose between this and that, rate it in the scale of 1 to 5 and see where it goes. It becomes very easy for you to decide. So ये कोई difficult task होता नहीं है. It's all again the mind game. Like any other behavior or any other emotion, procrastination is something we have created, and it is we who can overcome it. And steps and ways and means are very, very easy. Nothing to do with anybody outside or anyone outside. Just see what works for you best. Something that works for you may not work for me. Something that works for me may not work for you. So don't compare. Do something, chalk out a plan very much for yourself. आपको क्या suit करता है? What goes with your mindset? Identify that, work on it, and start getting rid of, start overcoming this habit of procrastination. Okay, friends, I hope the information आपको help की होगी, and you will stop procrastinating small things which otherwise you could easily do it. Because again, I'll want to reiterate. Procrastination is just not overcoming that habit. We have to overcome that because it is stopping our growth. वो एक habit हो जाती है, एक behavioral pattern है जो हमारी तरक्की और हमारी growth के बीच में आता है. And it is not laziness. Laziness is very different and procrastination is very different. Hope the whole session has made these two things very clear and it will help you to not procrastinate things in future.